Very good morning, students. I hope you all are doing great. Today we are going to start on chapter 14, which is aquatic life. जिसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अंडर वाटर यानी कि aquatic animals, aquatic plants के बारे में. So let's discuss about them in this chapter without wasting any further time. The name of our chapter is aquatic life, and the topics which we will discuss are aquatic plants, aquatic animals, aquatic birds, and aquatic mammals. नाउ वाटर बॉडीज जैसे रिवर सीज एंड ओशियंस वो सब कंटेन करते हैं वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ. द वर्ड एक्वा मीन्स वाटर. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स. नाउ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो बोथ सॉल्ट वाटर या फिर फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स या फिर मैक्रोफाइट्स. एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड फूड फ्रॉम दीज प्लांट्स. Aquatic plants do not grow in deep sea as sunlight does not reach there. Free floating plants कौन से होते हैं? Float freely on the surface of ponds and lakes. जो surface पे easily flow कर पाते हैं वो हमारे free floating plants होते हैं. They have spongy bodies filled with air to help them float easily. Their roots are not fixed to the bottom or the waterbed. For example, water hyacinth and duckweed. नाउ फिक्स्ड प्लांट्स कौन से होते हैं? इनकी जो रूट्स होती है वो फिक्स्ड होती है टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. यानी कि जो भी पॉन्ड है जिसके अंदर वो प्लांट है उसकी रूट्स जो है वो सॉइल से एकदम फिक्स्ड होती है. दे आर लाइट, फ्लेक्सिबल एंड हॉलो स्टेम्स बेंड इजीली इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर. देयर ब्रॉड लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ देयर लीव्स. फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली. नाउ सबमर्ज्ड या फिर अंडर वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं? दे ग्रो टोटली अंडर वाटर. ऐसे प्लांट्स जो टोटली अंडर वाटर ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड या फिर अंडर वाटर प्लांट्स. देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज. इनकी भी जो रूट्स होती है ये वाटर बॉडीज से फिक्स्ड होती है. एंड दे हैव लॉन्ग नैरो रिबन लाइक लीव्स विदाउट स्टोमेटा. दे हेल्प द वाटर क्लीन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट बाय एक्वेटिक एनिमल्स. इनका एग्जाम्पल होता है Vallisneria and Hydrilla. There is an activity which says answer the following questions. Why are submerged plants grown in aquariums? जो submerged plants होते हैं वो aquariums में क्यों grow करते हैं? तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं that submerged plants जो है वो aquariums में grow करते हैं ताकि to maintain water quality, nutrients and oxygen for aquatic animals. Next is why are stomata present on upper surface of the leaves of fixed plants? Because to ensure efficient gas exchange. Okay, so now next is weeds. Weeds क्या होते हैं? Weeds वो harmful plants होते हैं जो reproduce करते हैं और grow होते हैं rapidly and they compete with other plants for space and nutrients and hamper their growth. They block waterways by growing at high speed. वो क्या करते हैं? Waterways को block कर देते हैं क्योंकि वो high speed पे grow हो रहे होते हैं. For example, duckweed and water hyacinth. नाउ एल्गी क्या होता है? एल्गी एक स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है. ये ग्रीन या फिर ब्लू कलर के होते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिलीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन. However, their excessive growth can cover the whole water body like a thin layer जो किल करती है aquatic organisms को. They cause bad odor and water pollution जैसे marimo and kelp. Do you know the lotus and our national flower typically grows in stagnant water? We eat a hollow stem of the lotus as a vegetable known as kamal kakri. Now, aquatic animals के बारे में बात करते हैं. Aquatic animals live in near water bodies. Aquatic animals जैसे fish, octopus, seahorse, they live in water throughout their lives. Some animals जैसे turtle, seal, walruses ये spend करते हैं most of their lives in water. Now they come to the shore to rest and breed. Such animals are called semi-aquatic animals. Frogs, toads, salamanders spend most of their lives in water and
come to land to lay eggs. They are called amphibians. ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं बट टू ले देयर एग्स या फिर टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो लोग कहाँ जाते हैं, लैंड पे आ जाते हैं, उनको बोला जाता है एम्फिबियंस। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे जो फिशेस है उनके पास गिल्स होती है टू ब्रीथ इन वाटर, दे कैन ओनली यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विद फिन्स ताकि वो इजीली पानी के अंदर स्विम कर सके। जेलीफिश, क्लैम, कैरीफिश एंड कैटल फिश डू नॉट हैव अ बैकबोन, दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। नाउ फिश, व्हेल, डॉल्फिन, टर्टल, सील हैव अ बैकबोन विद अ स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। तो जिनकी बैकबोन नहीं होती दे आर इनवर्टिब्रेट्स एंड जिनकी होती है दे आर वर्टिब्रेट्स। नाउ shelled aquatic animals are gill breathers, they have paddle like flippers which help them to swim, जैसे crabs, lobsters and turtles। aquatic birds कौन सी होती है, aquatic birds जैसे duck, herons and waterproof feathers होते हैं इनके, ताकि इनको body warm और dry रहे, and they have webbed feet to swim and wade through water। It is an activity which says name the following, a bird with webbed feet, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं duck, एक amphibian, तो वी कैन राइट हियर एम्फीबियन में हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉग, एंड देन डिजीज कॉज्ड बाय एनोफ्लीज मॉस्किटो इज मलेरिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर एक्वेटिक मैमल्स, तो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स टू स्विम एंड लंग्स टू ब्रीथ, so they come regularly to the surface of the water to breathe। Now, it is your activity which says answer the following questions. Why do wading birds have long legs? जो wading birds होती है उनके long legs क्यों होते हैं? तो इसका reason है that so that they can, we can write here, they can walk through shallow water। Now, why are whales and dolphins called mammals not fish? Because they give birth to young ones and they breathe through lungs, not gills। Now, do you know frog, an amphibian, begins its life in an aquatic animal? Its larva यानी कि the tadpole breathes underwater through gills and skin. Later जो frogs होते हैं वो develop हो जाते हैं into land animals by losing gills and developing lungs। It is a glossary where hydrophytes means plants that live in water, also known as hydrophytes। Bottom, the lowest part of something, absorbing, holding all your interest and attention, webbed, having pieces of skin between the toes। Let's review the chapter. Aquatic plants grow in both salt water and fresh water. Their roots are not fixed to the bottom of waterbed. Stomata are present on the upper surface of the leaves of fixed plants. Submerged plants grow totally underwater, and free-floating plants block waterways by growing at high speed। Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Dash is an aquatic plant, so it is lotus। Dash are harmful and unwanted plants, weeds। Dash are invertebrate, so invertebrate is jellyfish। Then which of these is a floating plant? So floating plant is, it is duckweed, so we will mark here duckweed। And then dash are harmful plants which reproduce and grow very rapidly, weeds। Now fill in the blanks. Dash grow in both salt water and fresh water, aquatic plants। Dash float freely on the surface of ponds and lakes, duckweed। Stomata are present on the upper surface of the leaves. Small plant-like organism, algae। Dash mammals have streamlined body, aquatic। Next is true false. Aquatic plants are also called hydrophytes, true। Stomata present on the upper surface of their roots, false। Fungi are small plant-like organisms, true। Free floating plants float freely on the surface of ponds and lakes, true। Shelled aquatic animals are not gill breathers, it is true।
So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.